यहाँ पे देखें द सन राइजिंग बाय जॉर्डन। क्रिटिकल एप्रिसिएशन के बेटा कुछ जो है मॉड्स होते हैं। सबसे पहले आपने उसकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन में एज अ होल उसका कॉन्टेक्स्ट बताना होता है। यहाँ पे देखिए द सन राइजिंग इज अ टिपिकल पोएम बाय जॉन डन कैरेक्टराइज्ड बाय हिज यूजुअल विगर, sprightliness and freshness. It is a saucy muscular poem. It expresses a lover vexation against sun rising. The dawn is regarded as an impertinence which come to disturb the lovers. ठीक है, सूरज अरूज पे है या सूरज का डॉन है या वो सूरज निकल रहा है तो वो डिस्टर्ब कर रहा है लवर्स को। द पोएट इज डिलाइटफुली आउटस्पोकन एंड डिफाइंड। ही ridicules the sun as a saucy pedantic wretch and calls in question his right to peep through the windows and curtains of a lover's bedroom. There is defiance, contempt, perfect love, and deftly moving shuttle of metaphysical conceit. The supremacy of love, which transcends both time and space, for it knows no season and no climes, is established with the daring jugglery of words. Development of thought at this poem, like most of Donne's poem, is inspired by the poet love for his wife, and more. Donne's love amount to a passion. It is a perfect synthesis of spiritual and physical love. There are brilliant metaphysical conceit in the second and third stanza of poem. For example, the beloved is supposed to be combining in herself all the fragrance and gold of east and west. ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि मेटाफिजिकल कंसीट जो है सेकंड और थर्ड स्टैंजा के अंदर क्या है। ये वैसे हाइपरबॉलिक एक्सप्रेशन भी है। फॉर एग्जांपल बिलव्ड जो है वो सपोज टू बी कंबाइनिंग हरसेल्फ ऑल द फ्रेगनेंस एंड द गोल्ड ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट, यानी कि वो सब कुछ है उसके लिए। Look and tomorrow late tell me whether both the Indias of spice and mine be where thou left them or lie here with me. The lover and beloved are compared to all the state and all the princes of the world rolled into one. She is all slaves and princes, I nothing else. The lover's bedroom is considered to be the epitome of the whole world. Shine here on us and thou art everywhere. The poem is singularly free from the conventional and sentimental claptrap of love that was such a marked feature of Elizabethan love poetry. The unbeloved rises superior to all Elizabethan sweetheart in as much as she is as exalted being. She is all states of the world rolled into one. She combines in herself all the fragrance of spices and all the fragrance of spices and all the gold of rich wine. अब यहाँ पे देखें एक उसने लुबे लुबाव दे दिया है पहले दो तीन स्टैंजास के अंदर कि इस पोएम के अंदर एक्चुअली है क्या और वो बता क्या रहा है। उसके बाद आते हैं हम क्रिटिकल कमेंट्स में। क्रिटिकल कमेंट्स के अंदर जब हम आते हैं तो बेटा उसके अंदर हम थीम्स निकालते हैं जैसे यहाँ पे सक्सेसफुल लव पोएम है। फिर उस लैंग्वेज के बारे में हम बात करते हैं कि लैंग्वेज कैसी है। फिर उसके अंदर जो ये लिटरेरी टर्म्स यूज हुए हैं जैसे फुल ऑफ मेटाफिजिकल कंसीट, ठीक है। फिर एक्स्ट्रावेगेंट फैंसी, ठीक है, या इसके अंदर हाइपरबॉलिक एक्सप्रेशन भी हम कह सकते हैं। फैंसी बेसिकली इमेजिनेशन को कहते हैं। और एंड में हम कंक्लूजन दे देते हैं। दैट इज ऑल जो आप लोगों ने क्रिटिकल एप्रिसिएशन करनी होती है। अब आप खुद सोचें कि इसकी थीम्स क्या क्या हैं, ठीक है। ऑब्वियसली एक सक्सेसफुल लव पोएम है, ठीक है। और नंबर 2 ऑब्वियसली दैट इज अ मेटाफिजिकल पोएम। क्योंकि मेटाफिजिकल पोएट है इसलिए उसके अंदर यूज ऑफ कंसीट हुआ है, और क्योंकि मेटाफिजिकल पोएट है इसलिए यूज ऑफ हाइपरबॉलिक एक्सप्रेशन भी है, यूज ऑफ विट भी है। और फिर इसके अंदर जो है जो इनका जो ये बात करता था कॉन्जुगल लव की और स्पिरिचुअल लव दोनों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। ये सारी चीजें जो हमने इसके ट्रेड्स में पढ़ी हैं, जो हमने इसके स्टाइल में पढ़ी हैं जॉन डन के, आप उनको भी इसमें लिख सकते हैं कि भाई ये जो पोएम है इसके अंदर इसने विट यूज की है, इसने मेटाफिजिकल कंसीट्स यूज किए हैं या क्या यूज किए, ये सारी चीजें जो है आप इसके अंदर इसको देखते हैं, ठीक है। और एट द एंड अब ये देखें यहाँ पे वो क्रिटिकल कमेंट में क्या कहता है। द सन राइजिंग इन वाज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल लव poems of Donne. As a poet of love, he can be an extreme realist and deals with the physical side of it as also spiritual side, ठीक है। फिजिकल और स्पिरिचुअल दोनों साइड्स को वो देखता है। Here he treats of a situation very significant for the wedded lover but unusual in the poetry of love. Two lovers in bed who refuse to get up when the sun shines on them in the morning.
लैंग्वेज क्या है? बोल्ड एंड एक्सट्रावेगेंट है. द पोएट शेड्स द सन इन लैंग्वेज which for its boldness is unmatchable, unmatched in lyric poetry. The sun is a busy and old fool. It is a saucy and pedantic wretch. It can go and chide late school boys, apprentices, but has no jurisdiction over the poet and his wife. Lover season do not run to motions of the sun. Love all light, no season knows, nor climb, no nor or space months which are the rags of the sky. ठीक है, उसके बाद full of metaphysical conceit है. In expressing his contempt for sun, the poet displays all his learning and metaphysical wit, extravagant conceit, and employed in glorifying his beloved. आप लोगों की ये जो आती है ना, ये देखिए यहाँ पे उसने मेटाफिजिकल कंसीट्स की बात की है कि वो एक्सप्रेस करता है अपना कॉन्टेम्प्ट फॉर द सन. फिर पोएट डिस्प्ले करता है ऑल हिज लर्निंग और मेटाफिजिकल विट. जैसे मैंने अभी कहा कि वो अपनी लर्निंग और मेटाफिजिकल विट के बारे में बात करता है. एंड एक्स्ट्रावेगेंट कंसीट एंड एम्प्लॉयड इन ग्लोरीफाइंग हिज बिलव्ड. और एक्स्ट्रावेगेंट कंसीट वो यूज करता है, एम्प्लॉय करता है इन ग्लोरीफाइंग हिज बिलव्ड. रीसेंट जियोग्राफिकल discovery supply with him with the image of both the Indias of spice and mind, India and the West Indies, America. His wife is to him these two Indias in one. Extravagant fancy है. और ये सारा अभी हमने करना क्या है, ये बेटा एक शॉर्ट सी क्रिटिकल एप्रिसिएशन, ये 3-4 पोएम्स की आपने करनी है, जिसमें हमारी क्रिटिकल एप्रिसिएशन जरा मार्क कर लें. A valediction for bidden morning, the sun rising, good morrow. सिर्फ इन 3 की कर लें. आ गई वेल एंड गुड, नहीं आई तो भी वेल एंड गुड, क्योंकि हम ऑब्वियसली जॉन डन के बाकी क्वेश्चंस तो करेंगे. लेकिन बेटा आपने टेक्स्ट सारा करना है. ठीक है, टेक्स्ट बेटा आपने सारा करना है. तो ये है सारा.